In the previous videos, we have discussed about differentiation. In today's video, we will be discussing about another mathematical tool which is known as integration. This is the notation that we use for integration. This sign, which looks like an elongated S, is the integration sign. So this reads as integration of f with respect to x. Integration of fx with respect to x. Now, integration is just the inverse of differentiation. For example, you are given a function fx. If you differentiate it and you integrate the result, you will again reach fx. For example, subtraction and addition. From some number, if you subtract something and then you add the same thing, you reach the same number. Similar is the case for differentiation and integration. These are known as the inverse operations. That is, differentiation and integration are inverse. For example, d by dx of sine x is cos x. We say that cos x is the derivative of sine x, but we can also say that sine x is the integral of cos x. Sin x is the integral of cos x. It is the same as saying that cos x is the derivative of sin x. Okay, more generally, d by dx of sin x plus c. The differentiation of this constant will be 0 and the differentiation of sin x plus c will again be cos x. So this is a more general form. If we put c equal to 0, we will reach this equation. So this is a special case of this where c is equal to 0. So we can say that the integral of cos x dx is sin x plus c. This c here is known as the constant of integration. This c is known as the constant of integration. Okay. Here, the function which is being integrated is known as the integrand. Cos x is the integrand, and what we get in result as the result of integration, we call it the integral. So sin x plus c is the integral of the function cos x. Now let us learn a few properties of integration. Integration of a into fx dx, where a is any constant. A is any constant, we can take a out and integrate the function. So this will be equal to a times integration of fx dx. Take the integral out and integrate the function. Take the constant out and integrate the function. Integration of fx plus gx with respect to x, dx. Okay, if we have to integrate a sum of two functions, then we can integrate these functions individually and add them like this. It will be equal to integration of fx dx plus integration of gx dx. We have learned similar properties for differentiation also. Now let us learn a few formulae to calculate the integrals of different functions. Integration of x to the power n dx equal to x to the power n plus 1 divided by n plus 1. This is the formula that you may use to calculate the integrals of polynomial functions. In this formula, n should not be equal to minus 1. You can yourself see that if n is equal to minus 1, then the denominator of this will become 0, which will be an undefined form. So we do not use this formula for n is equal to minus 1. So what if n is minus 1? How do we integrate? So the differentiation, so the integral of x to the power minus 1 dx is written as ln x. Of course, we have to add here the constant of integration.
Whenever you are integrating, you have to add this constant of integration. So it will be ln x plus c. You cannot forget c here. So the integral of x to the power minus 1 is ln x. Let us see a few examples regarding this. Integration of x square dx. So clearly we can apply the formula for polynomials, and it will be x raised to the power 2 plus 1 upon 2 plus 1, it will be equal to 1 by 3 x cube. So the integral of x square will be 1 by 3 x cube plus c, the constant of integration. Here we have another problem. Integration of 4x to the power 6 minus 2x cube plus 7x minus 4 with respect to x. So we can integrate different terms individually and add them later. So it will be integration of 4x to the power 6 dx minus integration of 2x cube dx plus integration of 7x dx minus integration of 4 dx. So we can take 4 out, and integration of x to the power 6 will be x to the power 6 plus 1, that is 7, divided by 6 plus 1, that is 7, minus 2 times integration of x cube will be x to the power 4 divided by 4, plus 7 times integration of x will be x square by 2, minus 4 times integration of dx will be x. So this is the required solution. 4 by 7 x to the power 7 minus 2 by 4 will be 1 by 2. So 1 by 2 x to the power 4 plus 7 by 2 x square minus 4x. This is how we integrate this function. We have to write c here, the constant of integration. We don't have to forget this like I am forgetting. Now let us move ahead and look at some more formula for calculating the integration. So the integration of cos x dx is sin x plus c. The integration of sin x dx is minus cos x plus c. Integration of e to the power x dx is e to the power x plus c. The integration of a to the power x dx is a to the power x upon ln a plus c. You will be using them in various problems. Now consider this function sine 3x, and we have to integrate it with respect to x. We have learned the formula for integration of sine x, but can we integrate sine 3x? We cannot integrate it directly. So we have to use a technique of integration which is known as integration by substitution. We have to use integration by substitution, then only we will be able to solve a problem like this. So what I do, I consider this 3x and substitute this 3x with u. So let u be equal to 3x. ठीक, मैंने मान लिया कि 3x u के बराबर है. नाउ अब मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं दोनों तरफ x से डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे मिलेगा du by dx will be equal to डिफरेंशिएशन ऑफ 3x क्या होगा? इट विल बी 3. ठीक है, अब क्या मैं इससे ये लिख सकता हूं कि dx will be equal to du by 3. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको ये मिल जाएगा dx will be equal to du by 3. अब वापस अपनी प्रॉब्लम पर आते हैं. हमारे पास था इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x, लेकिन 3x को हमने u मान लिया, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sin u. हमारे पास था विद रिस्पेक्ट टू x यानी dx, और dx की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली? du by 3. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? ये बहुत आसान सी प्रॉब्लम हो गई है. इस 3 को हम बाहर निकाल सकते हैं, एंड इट विल बिकम 1 by 3 इंटीग्रेशन ऑफ sin u du. हमें मिलेगा
इट विल बी इक्वल टू 1/3 माइनस कॉस u। लेकिन हमारे पास ओरिजिनल प्रॉब्लम में u नहीं था, u तो हमने सब्स्टिट्यूट किया है, तो हमें वापस से u की वैल्यू उठाकर उसमें डालनी पड़ेगी। तो इट विल बिकम माइनस 1/3 cos u was 3x, यानी कि माइनस कॉस 3x/3। ये हमारा इंटीग्रल होगा साइन 3x का। इस टेक्निक को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। नाउ लुक एट अनदर प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ x टाइम्स cos of 2x square dx। दिस प्रॉब्लम कैन ओनली बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब सोचना ये है कि हमको किस टर्म को u सब्स्टिट्यूट करना है, किस टर्म के लिए हमको u सब्स्टिट्यूट करना है। तो सिंपल सी टेक्निक ये है कि आप उस टर्म को u सब्स्टिट्यूट करें जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद आपको कोई ऐसा टर्म मिले जो पहले से इस इंटीग्रेट में मौजूद हो। सो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट u for such a term that when you differentiate it you get another term which is already present in the integrand। ओके, यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर मैं 2x स्क्वायर को u मान लूं और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास जो टर्म आएगा वो x में होगा और x पहले से इंटीग्रेंड में मौजूद है, इसलिए हम u इक्वल टू 2x स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, du by dx will be डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर will be 4x। इसका मतलब dx क्या हो जाएगा, dx will be du by 4x। अब ओरिजिनल प्रॉब्लम पर आते हैं। हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ x टाइम्स cos of 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर को हमने सब्स्टिट्यूट किया है u, सो इट विल बिकम cos u और dx की वैल्यू हमने निकाल ली du by 4x, du by 4x। ये x से ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा ये 4 बाहर आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos u du। और इंटीग्रेशन ऑफ cos u क्या होगा, हम जानते हैं कि cos u का इंटीग्रेशन होगा sin u, सो इट विल बिकम 1/4 sin u प्लस c। u ओरिजिनल प्रॉब्लम में नहीं था, हमने सब्स्टिट्यूट किया है u को 2x स्क्वायर की जगह, वापस से 2x स्क्वायर डाल देंगे। इट विल बिकम 1/4 sin ऑफ 2x square plus constant of integration। So this will be the required solution। Let us take another example। Integration of cos square theta d theta। इसको भी हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। To solve such a problem, we'll have to do some background calculation। कुछ background calculation करनी पड़ेगी हमको इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो कैलकुलेशन क्या होगी देखते हैं। हम जानते हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये एक सिंपल आइडेंटिटी है, अगर आपने पहले नहीं पढ़ी है तो इसको अभी पढ़ लीजिए, इसको देख लीजिए। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहां से हम लिख सकते हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस, अब चूंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है तो sin स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब cos 2 थीटा विल बी इक्वल टू this minus and this minus will become plus and we will have 2 cos square theta minus 1। तो यहां से 1 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हमको क्या मिलेगा, cos square theta will be equal to 1 plus cos 2 theta upon 2। यहां से हमको मिल जाएगा cos square theta will be equal to 1 plus cos 2 theta by 2। तो यहां पर इस प्रॉब्लम को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 d थीटा। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो गया, हम इस 2 को बाहर निकाल सकते हैं। इट विल बिकम 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा d थीटा। So it will be 1/2
integration of, separating the two terms, d theta plus integration of cos 2 theta d theta. अब it will be equal to 1 by 2 integration of d theta will be theta plus integration of cos 2 theta d theta. अब इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा d थीटा हमको कैलकुलेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना होगा। तो ठीक है, अगर मैं 2 थीटा को u मान लूं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो लेट अस सपोज u इक्वल टू 2 थीटा, तो हमारे पास हो जाएगा du by d थीटा क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2, और यहां से आ जाएगा d थीटा इज du by 2, इसकी जरूरत हमको पड़ेगी। d थीटा इज du by 2। अब वापस इस प्रॉब्लम पर आ जाते हैं, यहां पर सॉल्व करता हूं। 1 by 2 थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 थीटा को मैंने u मान लिया, तो cos 2 थीटा विल बी cos u, एंड d थीटा की वैल्यू हमने निकाल लिया du by 2, तो du by 2, और जो 2 है वो बाहर लिख सकते हैं यहां पर हम, इट विल बी 1 by 2 theta plus 1 by 2 integration of cos u will be sin u, sin and solving directly sin u आएगा, और u क्या है, u is 2 theta, so this is 2 theta plus c, the constant of integration, so the solution will be theta by 2 plus sin 2 theta by 4. This is the required solution. Now let's have a look at another problem. Integrand is 12x cubed divided by 3x to the power 4 plus 1. Now we have to integrate it using integration by substitution. As I have previously told you that we have to substitute such a term for u that by differentiating it I get another term which is already present in the integrand. मुझको कोई ऐसे टर्म को u सब्स्टिट्यूट करना है कि उसको डिफरेंशिएट करने पर एक ऐसा टर्म आए जो पहले से ही इंटीग्रेंड में मौजूद हो। तो अगर मैं 3x की पावर 4 प्लस 1 को u सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो इसको डिफरेंशिएट करने पर जो पावर आएगी x की वो 3 आएगी, यानी x क्यूब की फॉर्म में आएगा, which is already present in the integrand. So we can substitute 3x to the power 4 plus 1 for u. Okay, now differentiating we will get du by dx is 12x cube, differentiation of 1 will be 0, okay, which gives dx is equal to du by 12x cube. Now let's get back to the original problem, which is integration of 12x cube divided by 3x to the power 4 plus 1 is u, and dx is du by 12x cube. 12x cube cancel out and we are left with integration of 1 by u du. Now the formula for the integration of 1 by u du is ln u. We cannot apply the formula for polynomials here, plus the constant of integration. What is u? U is 3x to the power 4 plus 1. It will be ln 3x to the power 4 plus 1 plus c. This is the required solution. Now look at another problem. Integration of e to the power minus 4x dx. So can we write it like this? Integration of 1 into e to the power minus 4x dx. Now we have to substitute such a term for u such that when I differentiate it, I get something which has power of x as 0. Okay, so if I differentiate 4x, I'll get minus 4, which has power of x as 0. So we substitute u is minus 4x. So after differentiation, we will get du by dx is minus 4, which means that dx is du by minus 4. Now back to the original problem. Integration of e to the power
minus 4x we have taken u, so it will be integration of e to the power u, and dx we have find out dx is du by minus 4. This minus 4 comes out, it becomes minus 1 by 4 integration of e to the power u du. So e to the power u, when integrated, it gives e to the power u plus the constant of integration. So minus 1 by 4, what is u? U is minus 4x. Minus 1 by 4 e to the power minus 4x plus c. This is the required solution. Now have a look at another problem. Integration of 1 upon x ln x dx. So if I take this ln x as u, so when I differentiate it, I will get 1 upon x, and 1 upon x is already present in the integrand. अगर मैं ln x को u सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो उसको डिफरेंशिएट करने पर आएगा 1 by x, और 1 by x पहले से ही इंटीग्रेंड में मौजूद है, इसलिए हम लेंगे let u be ln x. On differentiating we will get du by dx is 1 by x. It will give dx is equal to x du. Now back to the original problem. Integration of 1 by x, and what is ln x? Ln x is u, so it will be 1 by u. And what is dx? It is x du. Now this x cancel out and we are left with integration of 1 by u du. Integration of 1 by u is ln u. It will be ln u plus c. Now what is u? U is ln x. It will be ln x plus c. लॉगरिथम को डिफाइन होने के लिए जरूरी है कि लॉगरिथम के अंदर जो टर्म है वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, यानी दिस ln x should be a positive number because we are taking the log again here. So we take the modulus of this ln x. Okay, this modulus converts this ln x to a positive number even if it is negative. -5 का मॉडुलस 5 होगा, -3 का 3 होगा, तो this ln x will be converted to a positive number if in case it is not positive. So this is the required solution, ln of modulus of ln x plus c. In the next video we will be talking about definite integrals and we will be solving few more problems on integration.